Great. So let's first of all start executing all the commands that we should know in terms of theory and in terms of practicals, right? So the very first command that I would like to execute is a date command, right? It's not working, maybe it got hacked somewhere. Yeah, date, right? So this is the current date it is showing to us along the time. Fine. Now let me write calculator. Right? Just write cal. I'll get the current calculator. Now it depends upon the further arguments. If I would like to see the calendar of July 23, right? I have to write the month and the year and I will get the code. Now let me write who command that currently which particular terminal is on work. So who will tell me that, right? Then let me write who am I? Who am I, right? So it's not executing maybe due to some issue over there, but it will execute on your systems when you will work in your system in the lab, or maybe due to it is a single user, it's not giving the value. Okay, any problem can be there. Now after that, you want to display your date of birth, right? So how will you write it? Just write date, right? Then these double quotes with you. Then after that, in the double quotes, you have to write plus my birthday is, right? Then percentage D, percentage B, percentage Y, right? This is the date that you are trying to show you, right? Now, let me execute what it will give, whether it will execute something or not. So nothing, it will just add the message, my birthday is this, right? Whatever is the current date, that will consider as your birthday. Your date, then the month, and then the year. Right? A very small utility of the thing. Now, talking about the echo command, write the echo, then write any message which you would like to print there. Hope you are enjoying, right? Enjoying learning like this, right? Like this, right? So let me click here. Yeah, so it will show the thing that you are having, fine? Yeah, now the screen got enlarged. Now, echo we have executed, right? Anything we can show. Now, what type of the terminal is there on which we are working? Just write TTY, right? Then enter. This is the terminal on which we are working, device, right? One. Then, if we want to shift to any other particular location on the screen on which we are working, then we have to write a tput, right? It will just show you that you are currently here, right? Then control the cursor on the screen. Now, if you want to go to a particular position or some other location, then you have to write here tput cup, the location where you want to go 10, 5, right? The 10th row and the 5th column, right? And then let me click here. So now the cursor goes here, right? 10th row and 5th column, right? You can change to that thing also. Now,
if I want a bold sequence, right, then just I have to write tput bold SMSO, right? So it will convert the uh, look of the terminal that was over there, right? So I will not able to see that, right? Now, if I want to reverse this, then what happens? If I want to reverse this, then what happens? What I have to do? Yes, what I have to do? I have to write tput, right? I have to write tput space reverse MSO, right? So it will reverse RMSO and the highlighted part will not be there. Now, if I want to know the details of the Linux system, I just need to write uname. So it will tell me that you are using Linux first version, right? Whatever the version or device it is. If I want to see the version number of the machine, you simply username space hyphen R I have to write. So it will tell me the version number of the machine. So we have a machine on which we are working is this, that generic 15, right? Now, if I want to know the machine simply, that what machine we are using, simply M you have to write here. So this is the machine i6864. This is the configuration of the machine that you are having. If I want to know the complete details of the machine, right, then we have to write A here. So I will be getting like this. So this is the complete detail of the system on which we are working. Linux, OnWork, Standard, PCI 44. This is this Ubuntu, right? And this is the complete in configuration that I will get. Fine. Now, what next I have with me? Yes. Next I have script BC. Yeah, BC I can, we can talk about BC, basic calculator. So this is a basic calculator which got opened. Fine. Now, if I want to add or subtract anything or multiply anything, let me write here 5, right, into 6 and then enter, right? It will give me the result 30. So this is a calculator that has been open. 3 divided by 3, right? So 1. So these calculations can be done by BC. Now I have to exit from this BC. I have to write Control Z, right? I got out from the BC. Now I have to write script, that whatever I am writing all these commands, those will be comes in the script. So let me write first of all present working directory. I'm on works. So let me change my directory to desktop, right? So that I can able to show you that how we have got it, right? So let me, okay. Now let me write script here, script, right? So a file has been created here, right? So let me try whether I can able to shift it or not. Yes, I can able to shift the screen. So this is a TypeScript file which has been created after typing script here. Fine. So whatever command I will write here, the things will be written in the script, right? Now, what I have to do, let me write a command man. Let me write script. Okay? So the manual of script will get open. So this is the manual of the script, that what is the script and all that, what is its purpose, right? TypeScript, to create a TypeScript file which will record or maintain all the lists. So it is for that, right? So let me press Q and I will be here. Now what next? Let me see the settings of the terminal. I have to write stdy settings of the terminal. So these are the settings of the terminal. This is speed and all these things. Fine. Now I have to write the complete current stat settings. So simply this space hyphen A, right? stdy space hyphen A, then enter.
Now these are the complete description of the current terminal that we are having, right? So let me just place ls and see what is present in this current directory. So on the desktop, I am having only one file, that is a TypeScript. Fine. No issue in that. Now I have to create a directory. I have created, right? Make directory. Let me make a directory. Make a directory. I have made. So let me make a directory. Third year. No, not third year. We have made lots of time. Let me make 3 capital C. 3C. Right? So this is a directory that I have made it, right? This 3C will be on the desktop, as you're able to see. Now make directory, we have made the directory, okay. Now what happens after making a directory? I can make further directory in this directory. So I will make a directory 3C, then space, then 3C. Oh, what happens to it? Yeah, 3C1, 3C, then slash, right? 3C, 3C slash 3C1. एक डायरेक्टरी के अंदर दूसरी डायरेक्टरी अगर हमने बनानी है तो then what do we have with this? Okay, so that is the thing. एक डायरेक्टरी के अंदर अगर हमने एक डायरेक्टरी बनानी है, ठीक है, 3C के अंदर 3C1. Let me see whether I'm able to type or not. 3C के अंदर 3C1 if I have to make. Fine. So wait. Just enter and rewrite it, right? So this is a thing here. I have to write 3C1. 3C के अंदर 3C1 हमने बनाई, ठीक है? तो अब हम इसको क्लिक करते हैं, ठीक है? तो कह रहे 3C एग्जिस्ट नहीं करती, क्यों नहीं एग्जिस्ट करती तो है. Make a directory with a name and then subdirectory with the parent directory. It is existing. Let me see ls. Let me type here ls. ls. Okay. Okay. Now it will create the file into that. Now, so let me write ls, right? What are the files which are on the desktop? So after pressing ls, I will see 3C, and these are the files. So let me try to create again whether this is supporting that or not. So let me write 3C here, right? And then this slash, definitely this slash is there now. Then we have 3C1. This I have created. Now let me see whether I'm able to make it or not, right? Now it is there now, it is there, but I don't know why it's not, cannot create 3C file exist. तो हम थोड़ा ना कह रहे हैं कि उसको क्रिएट करना है, मैं कह रही हूँ कि उसके अंदर उसको क्रिएट करना है. So let me do one thing. I will remove. Okay, fine. 3C के अंदर हम 3C1 ही क्रिएट करते हैं. फाइल एग्जिस्ट. ओके, क्रिएट हो चुकी है. सो लेट मी से 3C2 क्रिएट कर दो. 3C1 के अंदर 3C2 क्रिएट कर दो, तो ये क्रिएट हो गई है, ठीक है. तो 3C के अंदर 3C2 क्रिएट होगी, तो ये आपका 3C है. लेट मी ओपन इट. तो ये 3C1 है, तो इसके अंदर 3C2 भी क्रिएट होगी. लेट मी चेक if it is supporting it. तो ये 3C2 भी आपकी क्रिएट हो गई है, ठीक है. So this is how to create multiple files, right? अब हमें क्या करना है, अब हम remove करते हैं, ठीक है. Now we will remove the directories. तो कैसे करेंगे? We have a file remove directory rmdir the directory name, ठीक है. तो let me
फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूव द 3C2, ठीक है। तो ये हमारे पास 3C2 जो है हम आए तो रहेगा ही, ठीक है। चलो पूरा रिमूव कर लेते हैं, RMDIR, राइट। रिमूव डायरेक्टरी, कौन सी डायरेक्टरी को रिमूव करना है? 3C2 को हम सबसे पहले डिलीट करेंगे, जो सबसे इनर मोस्ट होगी। तो 3C2 जो है डिलीट हो गई। नो सच डायरेक्टरी क्यों कह रहा है? अच्छा, उसमें जाना पड़ेगा क्या? पहले प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में जाना पड़ेगा, डेस्कटॉप में ही है ना हम। तो RM3C करके देखते हैं होता है कि नहीं होता, राइट। प्रेजेंट अब सीधा नाम लिया, 3C करके देखते हैं कि होती है कि नहीं होती, राइट। ओनली 3C, 3 और फिर C करके देख लेते हैं, राइट। 3C करके देख लेते हैं होती है कि नहीं होती, राइट। तो आपकी डिलीट होगी कि नहीं होगी? फाइल एग्जिस्ट करती है, कैन नॉट क्रिएट अ डायरेक्टरी। अच्छा, मेन डायरेक्टरी कर दिया मैंने, ओके। रिमूव करना है तो हमने इसको कर दिया RM, राइट, स्मॉल में RM, राइट, एंड देन वी हैव टू एंटर, राइट। लेट्स सी क्या होता है। डायरेक्टरी नॉट एम्प्टी, एम्प्टी करनी पड़ेगी। तो चेंज डायरेक्टरी करते हैं हम, 3C में चले जाते हैं, ठीक है। 3C में चले गए। अब आप कर दो, चेंज डायरेक्टरी करो 3C1 में, ठीक है। ओहो, चेंज डायरेक्टरी का कैप्स लॉक तो ऑन ही रह गया, इसको स्मॉल करके अब आप 3C1 में चले गए। अब आप करो रिमूव डायरेक्टरी 3C2, ठीक है। अब आपने करनी है रिमूव डायरेक्टरी 3C2, हाँ 3C2 अब आप रिमूव करो, ठीक है। तो अब आपकी 3C2 जो है रिमूव हो गई। अब आप चेंज डायरेक्टरी करो 3C, चेंज डायरेक्टरी 3C में आ जाओ। अगर है तो सही। अब आप चेंज डायरेक्टरी 3C1 में हो ना, 3C में चलो एक मिनट, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी देखते हैं क्या है। प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी आपकी 3C है, तो अब आपने 3C में आना है, ठीक है। यू हैव टू कम इन 3C, चेंज डायरेक्टरी इन 3C। इसको क्या हो गया? चलो नो फाइल्स है। चलो हम रिमूव करके देखते हैं 3C1 को। एंटर किया, नहीं करते हैं जी था। सो ऐसे ही एग्जीक्यूट होगा। यू कैन डू एट योर सिस्टम्स, मे बी ड्यू टू सम प्रॉब्लम वी आर नॉट एबल टू डू इट, फाइन। So this is how we can do. Now let me change my directory and move to the desktop. Okay, I moved to the desktop. So क्या हो गया? No such file. Stop created. Let me write CD. Okay, CD space hyphen. Right? I reached at okay, root directory में आ गई मैं, 3C में आ गई। अब रिमूव करके देख लेते हैं। रिमूव dir 3C1, ठीक है। रिमूव, हाँ रिमूव हो गई है। अब क्या करना है? अब हम इससे भी बाहर आ जाते हैं, ठीक है ना। इससे भी हम बाहर आ जाते हैं, CD स्पेस डॉट डॉट, राइट। एंटर किया। लेट मी चेक कि हम डेस्कटॉप में पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते। सो डेस्कटॉप पे हम पहुंच गए। अब हम 3C को भी डिलीट कर देंगे, ठीक है। 3C को भी हमने डिलीट कर दिया, हो गए। डेस्कटॉप पे पहुंच गए। अब सिर्फ एक 3 और एक टाइपस्क्रिप्ट ही पड़ी और कुछ नहीं पड़ा, ओके।
इग्नोर। नाउ टच करके, टच से एक हमने फाइल 1 बना ली, राइट। एक हमने फाइल 1 बना ली है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये फाइल 1 बन गई, और फिर हमने एक का किया, हमने फाइल 2 बना ली, ठीक है। एक हमारी फाइल 2 बन गई ना, 2 फाइलें बन गई। अब हम क्या करते हैं, इनको ओपन करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा इनके अंदर कुछ ना कुछ, ठीक है। तो फाइल 1 को मैं ऐसे ग्राफिकली ओपन कर लेती हूँ, और लेट मी राइट समथिंग, हाँ, लेट मी राइट एनीथिंग, लेट मी राइट दिस कंटेंट ओवर देयर, ठीक है। तो ये मैंने कंटेंट यहाँ पर लिख दिया, पेस्ट हो रहा है यहाँ पे, टाइम लगेगा क्या, चलो लेट मी राइट एनीथिंग, राइट, let me write anything over here, and then I have to save it, right। ये हो गया, F1 हो गया ये, right, this is the F1 file। Now I have to close this file and open the file 2, right। इसमें मैं सपोज करो A C E N M T, ये सब कुछ मैंने लिख दिया, मैं इसको कर देती हूँ सेव, ठीक है। तो हमने इसको सेव कर दिया, राइट, ये हो गया हमारा सेव। अब हम इसको भी कैंसिल कर देंगे, राइट, कैंसिल कर दिया हमने। अब हमें क्या करना है, एक बार फाइल को चेक करना है, कंटेंट को। तो कैट करा, फाइल 1 लिख लिया कि फाइल 1 में क्या है वो दिखा दो, लेट अस सी, है ना, कि कुछ क्या आता है क्या नहीं आता। तो ये कंटेंट आ गया जो फाइल 1 में था, ठीक है। उसी तरीके से हमारा मन है कि फाइल 2 में क्या है वो दिखा दो, तो हम फाइल 2 का सारा कंटेंट दिखा देंगे, राइट। तो दिस इज द वे हाउ वी कैन सी। अब हमने मूव करना है या रीनेमिंग करनी है फाइल की डायरेक्टरी में, ठीक है। ओल्ड फाइल का डाटा न्यू फाइल में डालना है तो एमवी करके कर सकते हैं, सीपी करके कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, एंड ऑल दैट, राइट। तो ये सारी कमांड्स हैं हमारे पास, सिंपल वाली कमांड्स हैं, ठीक है। टच हो गया, कॉपी कर दिया, दिस वी हैव ऑलरेडी डन, राइट। नाउ अब हमारे पास लॉन्ग फाइल्स को व्यू करने के लिए कंटेंट्स को कैसे डेटा को डिस्प्ले करना है फाइल का, दैट वी कैन डू, ओके। तो डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ अ फाइल दैट वी वांट टू सी, ठीक है। तो देखो अब हमें क्या करना होगा, कैसे करना है, हमें मोर करके फाइल का नेम हमें डाल देना है कि कितना डाटा हमें आप दिखाते हो। तो हमने लिख दिया फाइल 1, देखते हैं कितना डाटा हमें दिखाता है। ये तो छोटी सी फाइल है तो इसलिए हमें बहुत कम ही दिखा रहा है, right? अगर हमने ज्यादा डाटा देखना है, लेस डाटा देखना है, तो सिर्फ फर्स्ट 24 लाइंस दिखा देगा, राइट। अभी तो डाटा कम है तो इसलिए हम नहीं गेट कर पा रहे हैं, बट अगर फाइल्स बहुत बड़ी बड़ी होती हैं तो उस केस के लिए होता है। तो दिस इज द लेस कमांड, कि जो लास्ट की जो फाइल डाटा है वो दिखा देगा, लास्ट 24, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद यहाँ से बाहर आ गया हूँ, हेड। हेड में क्या होगा, हेड जैसे मैंने किया, ठीक है, हेड, फिर मैंने फाइल 2 जैसे सपोज करो कर दिया, यहाँ पर एंटर किया। अब स्टार्टिंग के है दिखा देगा वैल्यूज को, ठीक है। वो डिपेंड करता है हमारे पास फाइल कितनी बड़ी है, तो मल्टीपल फाइल्स के भी आप देख सकते हो, कम फाइल्स का भी देख सकते हो, राइट। टेल भी चलता है एंड ऑल दैट, ठीक है। नाउ अब हमने क्या करना है, WC वर्ड काउंट हमें देखना है अगर किसी पर्टिकुलर फाइल में, ठीक है। तो मैं फाइल 2 करती हूँ, सपोज करो वर्ड काउंट, ठीक है। तो ये मुझे बता देगा कि ये आपका वर्ड काउंट है, टोटल इतने आपके हैं
करेक्टर्स हैं, लाइंस आपके पास 6 हैं, और जो वर्ड्स हैं आपके पास वो भी इतने हैं, ठीक है। और 95 उसके अंदर टोटल करेक्टर्स हैं, वर्ड्स उसके अंदर 6 हैं, और लाइंस भी उसके अंदर 6 है। अब लेट मी सी सेम फॉर द फर्स्ट 5, ठीक है। तो फर्स्ट फाइल के अंदर वो कह रहा है 5 लाइंस थी आपके पास, 5 ही आपके पास वर्ड्स थे, और 96 उसके अंदर जो है आपके करेक्टर्स थे, ठीक है। तो कहेंगे ठीक है, जैसे है, ओके फाइन। तो ये हमारा हो गया वर्ड काउंट। फिर हमने कंपेयर करना है, कंपेयर हो गया, फाइन। कंपेयर हो जाएगा, डिफरेंस, यस डिफरेंस अगर हमने दोनों फाइल्स का निकालना है तो डिफ कमांड है हमारे पास, देन वी हैव द नेम ऑफ द फाइल 1 फाइल 2, राइट, एंड देन एंटर। तो दोनों में क्या डिफरेंस है उसकी डिटेल आ जाएगी कि ये डिफरेंट है और ये डिफरेंस नहीं है, राइट। अब दोनों में जो डिफरेंस है वो डिस्प्ले हो गया, बट यहाँ पे तो कुछ ऐसा डिफरेंस है नहीं कि हमने कुछ क्लियरली कुछ लिखा हो, फाइन। तो आप एक कंटेंट फाइल लेना, जैसे लाइक कैट करके कोई फाइल आप बना लेना, फिर उसमें आपको क्लियरली समझना है। उसके अंदर एक्सप्रेशन है, मेक डायरेक्टरी है ना, एक्सप्रेशन है EXPR, राइट, स्पेस 5+7, एंटर किया, एडिशन हो गया। अब अगर हम यहाँ पर स्पेस ना दे, राइट, 6+7 कर दो without any space, so it will not work, it will not give you the result, it will just display that thing. So this syntax value you have to create. Now a very beautiful command using make directory, let me create thousands of files, right, thousands of 100, let me take 10, let me take 10 folders to create a 10 folders, then enter. So it will create 10 folders on the desktop, ठीक है। तो ऐसे रोटेट करके देखें तो you can see कि हमारे पास 10 folders जो हैं ये बन गए हैं, ठीक है। ओए कहाँ गया, ठीक है। तो this is the thing that we have this, right. So these are the few things that we have with us, rest of the thing we will do later on, fine. So